Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the phylum Porefera. Let's start. Now, the phylum Porefera. So, पहली बात तो mark कर लें. That is, these are the most primitive animals as per the concept of evolution. Most primitive. So, सबसे सादा तरीन animals यही हैं और इनको समझा these are the most earliest forms. बहुत ही सादा से animals. The word Porefera जो ये derive किया गया, it's from a Latin word that is porous, which means pores, and fera, which means bearing. So ये pore bearing animals है. इनके अंदर दो मुख्तलिफ तरह के pores हैं जो हम डिस्कस करेंगे. In the first year we have discussed along with the diagrams in detail. यहाँ पर हम उसको सिर्फ एंटी-टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे क्या बातें उनमें से पूछी जा सकती हैं. So overall there are 5,000 species of this phylum and all aquatic. सब पानी में रहते हैं. All aquatic. लेकिन इसमें भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से कि 150 species they live in fresh water while the rest of them are marine, means sea water or ocean water. Clear? So in 5,000 में से सिर्फ 150 species हैं जो कि fresh water में रहती हैं. Dear students, चलते हैं इनकी basic organization की तरफ. So they have two layers. Their body is made up of two layers. The outer layer, which is made up of pinacocytes, and this forms the pinacoderm. Pinacoderm. Derm means layer, pinaco means from the pinacocytes. Or inner layer, that is made up of choanocytes. So it forms the choanoderm. And in between these layers, उनके दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर है. ये दो लेयर सेल से मिलकर बनी है. इनके दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर है. That is called, in between there is mesenchyme. And this mesenchyme is composed of two major things: amoeboid cells and the spicules. And the spicules. अब dear students, जो spicules हैं, they make the exoskeleton. And they are made up of calcium carbonate. Calcium carbonate. So this is their basic body organization. इनकी body के अंदर दो तरह के pores हैं. So let's talk about the pores. Inhalant or incurrent.
पोर्स जहाँ से बॉडी में इनके पानी एंटर होगा. सो एंड द अदर वन द एक्सहेलेंट और एक्सक्रंट जहाँ से वाटर मूव आउट करेगा, इट विल मूव आउट. सो दो तरह के पोर्स हैं. इनहेलेंट या इनकरंट पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया. इट्स अ प्लूरल. ऑस्टियम इज द सिंगुलर, while the exhalent pore is single. ठीक है, जो excrement है जहाँ से वाटर निकलता है, that is only single, which is called osculum. That is osculum. It is large and single, while these are small and many. Clear? So इस हवाले से याद रखना है. Now let's talk about their food. So what is their food? So their food is comprised of two major things. Number one, 20% food, it is the plankton. Plankton means the microscopic organism. So plankton में फिर दो तरह के food हैं. Either the phytoplankton, or zooplankton. Phytoplankton, so these are the drifting plants, while the zooplankton, these are the drifting animals. Clear? So it comprises about the 20%, while the rest of the 80%, that is detritus. 80% is comprised of. And what is detritus? You know very well, the dead organic matter. That is the dead organic matter in the form of dead animals or dead plants जो इस रीजन तक पहुंचते हैं. सो ज़्यादातर इनका यहीं पर मौजूद है. डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी जो इनर लेयर है, दैट इज द क्वेनोसाइट्स. इनमें मौजूद हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स. द क्वेनोसाइट्स have flagella which produces water currents and use them for capturing food. तो जब ये इनके जो इनर लेयर के अंदर यानी कि क्वेनोसाइट्स में फ्लैजिला इस तरह से मूव करते हैं, वो वाटर करंट्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी मदद से ऑस्टिया के ज़रिए जो वाटर अंदर आएगा और उस वाटर के अंदर मौजूद होगा इसका द फूड सब्सटेंस. क्लियर? और नाउ लेट्स टॉक अबाउट, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर याद रखना है, दे आर एसिमेट्रिकल. इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है. दे हैव नो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स. कोई ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद नहीं है. दे लैक द एक्सक्रीटरी एंड ट्रांसपोर्ट and respiratory systems, ये इनके अंदर नहीं है.
अलबत्ता अगर हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, सो देयर आर सम न्यूरॉन्स, वो मौजूद हैं कुछ न्यूरॉन्स जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं सम स्टिमुलाई विच आर रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, एंड दे हैव a reproductive system. अब डियर स्टूडेंट, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ दो तरीके से होगा. रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स. Asexual as well as sexual reproduction. Both of them, these are observed. In case of asexual reproduction, दो तरह की birds बनती हैं इनके अंदर. The process is called as budding. आउटग्रोथ बनेगी वो पेरेंट सेल के साथ, और फिर उसके बाद वो it will be converted into the adult. So two kinds of birds are there. The external bud and the internal bud. और इंटरनल बर्ड्स के लिए स्पेसिफिक नेम गिवन है हमारे बुक में. द इंटरनल बर्ड्स आर कॉल्ड गैम्यूल्स. इसको भी एमसीक्यूज के लिए मार्क करेंगे. और जहां तक बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो याद रखना, मोस्ट ऑफ देम आर hermaphrodite. मोस्टली hermaphrodite. Hermaphrodite means in a single organism both gonads or both sex cells are formed, both kind of gametes are formed. और इनमें if male gametes are formed first, अगर पहले बने, चूंकि hermaphrodite हैं, अगर मेल gametes पहले बने, मेल सेक्स सेल्स पहले बने, this is called, the condition is called protandrous. Protandrous. Clear? और जहां तक लोकोमोशन की बात है, so adults, they are sessile while their larval forms are motile. वो मूव करते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स हैं सेसाइल है, वो हरकत नहीं करते. they spend their whole life by attached to the rocks. They are sessile. They cannot move. And as far as their size is concerned, they ranges from few millimeters in width to about 1 meter tall. इस चीज को जरा ज़हन में रखना है. यहाँ पे मैं लेंथ की बात करूँ, हाइट की बात करूँ, टॉल, ठीक है, 1 meter tall. And its example is Scolimestra jobeni. Clear? It's about 1 meter tall. और इसके अलावा जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, here are a few examples. Other than Scolimestra, there are sponges and Cycon and Euplectella. Euplectella के हवाले से MCQ मार्क करें. It is called as Venus flower basket because of its glassy framework.
and sponges, Cycon, Euplectella, Scolimestra jubuni, and one more, that is Leucoslenia. Leucoslenia. So these are the 5 examples related to this phylum. और जहाँ तक बात है इनकी इम्पोर्टेंस की, सो इम्पोर्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। चूँकि ये स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्ज के अंदर एक खासियत होती है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकती है, लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करे, वाटर एब्जॉर्बेंट यानी फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। इसी तरह से साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी रखती है, ठीक है। सो जो आपके सर्जिकल गाज हैं, सर्जरी में जो इस्तेमाल होती हैं, सर्जिकल गाज, इसी तरह से फॉर साउंड प्रूफिंग, बिल्डिंग्स के अंदर, बड़े बड़े हॉल्स के अंदर वाले साइड पे स्पॉन्जेस लगाई जाती हैं। तो चूँकि ये स्पॉन्जी होती हैं, इनके अंदर पोर्स होती हैं, तो ये पोर्स क्या करते हैं, साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो साउंड होता है, जो एक्सेसिव नॉइज़ होता है, वो उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है द बिल्डिंग्स नियर द एयरपोर्ट्स, वहाँ पर भी यानी कि जो एरोप्लेन्स का काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, तो उन साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जो है ये लगाई जाती हैं, ताकि वहाँ से नॉइज़ पॉल्यूशन को कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। इसी तरह से लाइक द लूफास which are used in the bathrooms. Clear? So these are the points which are related to its medical and the other importances.